Hello. Good evening, everyone. So, welcome back. Once again, I'm here to give you a basic introduction or basic knowledge, or I can say to prepare you at the level of the for interview. Okay, at the level of the interview in digital design. So, as you know that we have finished around 27 classes, and I have covered in very detail regarding the digital design and its flow. Like in starting, I have covered that is about the gates, then how to make the gates with the help of universal gates like using NAND and NOR with shorting and without shorting. Then we discuss about the black box approach, and then I have given you a very brief information about that how this adder is uh, is working, okay, on respect to the FPGA board as well as on the tool. Then I have moved on to Verilog, and I have covered like data flow, gate level modeling, and the introduction of language elements. Now I'm planning to again start with the digital, that is with the subtractor, and later on we'll see that how these subtractors and other components like mux, demux, adder, subtractor, decoder, encoder, 2s complement, multiplier, divider, and then sequential, that how these things are implemented using with help of the Verilog and then on the FPGA. Okay. So today, as you know that I have mentioned here that we are taking care of the subtractor. So today I'm going to give you the brief introduction about subtractor. Some myth I'm going to break because maybe many of you aware that subtractor the basic information, but today at least we are going to discuss at interview point of level at how this subtractor is help you to take the job. Okay, so let's back to the screen and enjoy this session. Okay. Okay, so to start with the subtractor, let me once again help you to understand that what project we are going to make it and what components are required to make the project. Okay, so I'm planning to start with the sign calculator. Okay, so this sign calculator is basically just I'm revising it for your information. What is sign calculator? This is our hardware based project. Okay, so sign calculator is that you have input A 10 and you have input B 9. Okay, so you have two input A and B, and you have a mode M0 and M1, and you want to add, for example, you have two options 00, 01, 10, and 11. So if you give 00, it will basically add your two input. If you give 01, will subtract 10, multiply, and 11 divide. And then you have two more option that is called sign 0 and sign 1, which will help you to decide the sign of your A and B, sign of your A and B. Okay, so if you give 00, that means your sorry, uh,
If you give 0 0, that means your A and B 0 0, that means your A and B is both is plus plus. Okay, that is a sign of your A and B is plus plus. If you give 0 1, that means sign is plus, B is minus, A is plus and B is minus. If you give 1 0, that means A is minus, B is plus. And if you give 1 1, that means both are negative. Okay, so other than A and B, we have another input. It's called clear. Okay, so the role of clear is, if you give 0, the all output is 0. If you give 1, that means your design is working. Design working. Okay, so this is my specification. So basically, we have to design the circuit, that is the hardware design. That is the hardware design of my, okay, hardware design of sign calculator. Okay, so if I let me show you one demo. I'm going to show you a demo, just for a revision purpose, how this sign calculator is basically going to work. Okay, so just hold on. So how this project is going to help you basically? This project is going to help you in basically developing the logic, which is basically missing in a lot of the engineers, in most of the engineers. Okay, they are not able to think, they are not able to design, they are not able to uh, like to think about the at the hardware level, that how the inputs and output is actually working, okay, with respect to the combination and sequential. Okay, so everyone is teaching about digital, but here I am focusing more on a hardware side, not only the theory side. Okay, because my job is to help you to take the job in a Vilisa industry, and the Vilisa industry is looking for the people who are basically sounds logical and not theoretical. Okay, so this is your Xilinx ISC tool, which generally we are basically using this tool to build the hardware design using the combination and sequential gates, okay, circuits and gates and circuit boards. And this is the ISC tool, where basically we have designed the circuit of complete sign calculator. Okay, and I'm going to show you the demo on its simulation. Okay, so as per my understanding, every engineers in this in India, whoever has taken the electronics or electrical or VLSI, okay, they should use this tool to sharpen their digital skills. Because if you know how to design the block of adder, subtractor, multiplier, divider, and then to connect it to get the desired output. Okay, so basically this will help you to give the picture of what is actually engineering. So engineering basically start with the failure and then with the sub output. Okay, so here is our adder, subtractor, multiplier, and divider. Okay, so you can basically we have designed this. Okay, push into symbol. We have designed the 8-bit adder with the help of a simple half adder and full adder. Okay, so this is again I'm pushing it more. So this is basically a 8-bit adder. Okay, so this is 8-bit adder, and this 8-bit adder, if you remember that we have designed this 8-bit adder in our initial classes.
Okay, so we are going to use the same 8-bit adder here. So this the 1-bit adder. So this 8-bit adder is made up of 1 bit full adder. So this is your full adder. Okay, this is your optimized full adder, right? So let's come to the simulation point. So go to the design, select simulation, select design, select simulate behavior model, run. Okay, so we are going to basically verify our design. Okay, I am giving you uh, some introduction that how you're going to take the project and how you're going to verify it. Okay, uh, so we have input A of 4-bit, input B of 4-bit. Then we have a mode 0001 1011, which is going to decide the addition, subtraction, multiplication, and division. Then we have a clear. Then we have a sign A, sign B, which is going to help you to identify that which input is plus, which input is minus, and this is my final output. Okay, this is my final output. So if I remove all the sub signals, okay, so this is my final output. Okay, so basically these inputs are in the bits. Okay, so A is 4 bits, B is 4 bits. Okay, so let's give A 9. Force constant A9 means 1001, and let's give B 10, 11010. Okay, and let's multiply 000110. So 10 is used for multiplication. So I will give 10, and this is my clear. This is my clear button. So I will give 0 to, okay, and 0 means reset means I will give 0, then all the output will be 0. Okay, and then sign A, I will take initially both 0 0, that is both plus 0 and 0. Okay, so whatever I have explained you earlier, I am just helping you with the result. Okay, so you will see here that all my output is 0. Okay, so I can change from here from binary to unsigned decimal. Now this is 9. From binary to unsigned decimal, this is 10. This mode is actually 10. Okay, this is not a 10. This is actually 10. So I can change the binary from binary uh, to decimal. Okay, and this also output I can change from binary to unsigned decimal. Okay, so as I mentioned that I am doing multiplication and with unsigned input A and B, with unsigned input A and B. So the output is 0. Okay, so 0, why? Because reset is 0. So let me disable the 0, that is I will give 1. Okay, so see the output is 90. We got 10 into 9, 90. Okay, if I make A positive and B negative, then in that case A positive, B negative, in that case the output will be minus 90. Sorry, now I have to change the sign also, because I'm getting output in minus, so I will change it to sign. See, minus 90. Okay, if I change the operations, like the mode is addition 00, that is the 100, that is the addition. So 10 plus minus, sorry, 9 plus minus 10 is output is minus 1. Okay, and if I change the mode again from 00 to 01, that is the subtraction. So 9 minus 10 minus 9 minus minus 10. Okay, so output is your uh, plus 90. Okay, so you can see here that we have basically designed the circuit. Okay, and now we have
calculated or we have verified our design. Okay. So team, uh, you know that what is exactly engineering? Engineering is something start with the failure and then end with the result, success. So I'm mentioning again that the tool we are using here, this tool is very strong tool in terms of learning the digital. If you follow me and if you download this tool and you start learning the digital using this tool, start implementing all gates, combination, sequential. Okay, you will never forget the theory of all and every combination and sequential logic. Okay, currently what happened at I whenever I met the fourth year guy, third year guy, okay, third year students or fourth year students, basically when I ask questions, what is D flip flop, what is T flip flop? So mostly 90%, 95% people reply that, sir, I have gone through it in my second semester or in my third semester. So basically, this is not a right reply. Why? Because you are replying because you have basically prepared for to get the marks, not to get the job, not to make the career. Okay. So whenever I'm talking about the digital, I should start with this this tool that is Xilinx ISA. Okay, so I have shown you the demo that how the input is coming and how the output is going. So basically, we have designed the complete circuit on Xilinx ISA and then we have verified. Now to design the complete circuit, we have to first prepare the hardware. Okay, so to prepare the hardware, we should know what is my specification. So specification is my that is this is my input A, this is my mode, this is my sign, this is my sign values, and this is my clear. Okay, so in my last class, uh, we have finished with the adder. Okay, so what components required to make this circuit? The components required to make this circuit, top level circuit, top level block is required adder, subtractor, okay, multiplier, multiplier, and divider. Okay, now the brain is okay. The brain of this is is the full design is 2s complement. Okay, so the brain is 2s complement, right? And you required some basic components like other than this adder, subtractor, multiplier, divider. You required mux, demux, okay, decoder, and sometime maybe required a comparator. Okay, so with the help of these components, okay, these are the only components are available in combination. So with the help of these components, basically you are going to design the the circuit of the hardware circuit of okay sign calculator, then hardware design of algebraic algebraic equations, algebraic formulas like a plus b square, a minus b square, a plus b cube, a minus b cube. Okay, so you can design the hardware of those things also because they are generally made up of using addition, subtraction, and multiplication. Okay, only the sign calculator is basically using the divider and minus sign. Okay, rest algebraic equations and third one is your geometry. Okay, so geometric equations like area, calculation of area, calculation of volume, and of uh, any triangle, rectangle, quadrilateral, एंड सर्किल का भी कुछ भी जो अभी आपको ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस पता है तो बेसिकली इफ यू आर फ्रॉम सेकेंड ईयर
or if you're in first year, or if you are in class 11, class 12, class 9, class 8, that is from class 6 onwards, the kids are kids can basically use this tool to learn the digital. Okay, to make this circuit not required to have understanding of K-map, UAS, SOP, Boolean algebra, etc. As whatever I'm going to taught you. So if you follow me, you are going to make the circuit of all. So at the first level, okay, so at the first level, at zero level, every engineer should design the circuit from its own. Okay, so here in that case, you don't have to go and purchase the breadboard. You don't have to go and purchase the connections. You don't have to go and purchase the wires. Okay, I'm not talking about that. I'm not talking about that. Go and purchase the breadboard, etc. Okay, if any component is corrupted, then you will wait for the another component to come. Okay, it's not required. This tool is very sufficient, very enough sufficient to start with the design. Okay, so now let's start. Okay, subtractor. Okay, subtractor. Subtractor. Right. So, so what is subtractor basically? A subtractor is a type of logic where basically you are differentiating or you are minusing from A minus B or B minus A. Okay, so something like it is A minus B. That is in terms of mathematics, that is 10 minus 9. So your output is 1. Okay. So in terms of binary, okay, because we are learning the digital, this here the subtractor is basically consists of two input. Okay, two input A and B and two output. Okay, that is your difference. That is the difference between this one is basically a difference between A and B. So whatever I have earned and something I have written it. Okay, so the difference between earned and returned is called a dif, is called a difference. Okay, difference. Okay, ERENCE. So you have a two output difference and one is your borrow out. Borrow out means something if you are at very less stage. If you are at very less stage, you don't have enough amount to purchase something, then you basically take the money, okay, from some of your friends. So that is called you are borrowing it. Okay, so in that case also, any if first input is less than second input, then in that case you are helping the first input to make it a to make it a big amount. Okay, and then you can minus from the second input. Okay, or something difference, right? So let's see borrow. Okay, borrow out. Please remember that we have to use the keyword borrow out. Okay, I cannot say difference. Sorry, I will not say borrow, because if you say borrow, then borrow is basically used for borrow in also and borrow out also. Similarly, just like a carry, so there is carry out and carry in. So both carry out and carry in having the different purpose. So carry out is going to become the carry in, and carry in is then calculating with the A and B and giving you the output and again carry out signals. Okay, so if you say that if in an interview you are going and interviewer asks that what is adder, if you say adder is something 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 and has two input sum and carry, so this is wrong reply. So you have to mention that sum and carry out. And similarly, the full adder has a input signal known as carry. No, say it carry in. Don't say only carry, because if you say carry, then carry is how you are saying that carry is at both the end, at output side also, at input side also. That means that means you are doing mistake. You are careless. And if you are careless, if you are
then you can do the same mistake in design also, and then there will be a huge loss. So try to understand. You have to maintain the professionalism while replying the every questions. Okay. So here difference and borrow out. So now let's see. So whenever we have a two input A and B, then we have a four options. Okay. So 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So basically you are not minusing like this. Okay. This is not we are going to do. We are going to minus B from A. We are going to minus B from A. So A minus B is very simple. This is difference and this is a borrow out. So A minus B, 0 minus 0, difference, difference. 0 and 1. So 0 and 1 means that A is 0 and B is 1. Again, so B is at higher side and A is at lower side. So here you are requesting to someone that please provide me at least 1 to make it bigger. Okay, so in that case, we will provide 1. So this 1 0 is basically become the 2. So the binary of 2 is what? Is 1 0. The binary of 2 is what? 1 0. So now this become 2. Okay, so 2 minus 1, 1. Okay, this is the one thing, or 1 0. Okay, so 1 0 means again same thing. Okay, 2 minus 1, that is your 2. 2 minus 1 1. Okay, so what you have done, you have borrow out 1. This is what you have borrowed. Okay, this is what you have borrow out. This is what you have borrow out. Okay, यही है जिसने जो आपको मिला है, जुड़ा है आपने borrow out लिया है. So this borrow out is going to add here. Okay, and what is the difference? Now then output is 1. Output is 1. Okay, output is, sorry, pen. Okay, now this is very simple. 1 minus 0, 1 minus 0 is 1. And there is, you have not borrow out anything, then output is 0. And 1 minus 1 is what? 0 and 0. Okay, my dear. So So we are basically preparing the 8-bit adder. Okay, I'm going to prepare the 8-bit adder with the help of single component known as a half subtractor. Okay, half subtractor, full subtractor, 4-bit subtractor, 8-bit subtractor. So this is what I required here. Okay, I required here 8-bit subtractor. Oh, sorry. I required here 8-bit. 8-bit. I already prepared 8-bit. ओके मैं पहले भी 8-bit बना चुका हूं स्टार्टिंग की क्लास में. So I have prepared 8-bit. Now I am going to prepare this 8-bit, and then we prepare this multiplier, divider, and all these components, and then we are going to merge it. Okay, so let's see. Okay. So what is this? This is your XOR. This is your XOR. What is this? This is your simple logic. Okay, this is your simple logic. Okay, so this is simple logic. Okay, so let's see, let's design this. Okay. Okay, so let's take, okay. So whenever we are going to design the logic of this, you have to understand your, what first thing you have to understand, that the majority of the output is 0. Okay, right? So I don't know that कि कौन सा गेट पहले लगेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ.
ठीक है, क्योंकि ये कोई गेट का आउटपुट नहीं है, राइट। ये कोई गेट का आउटपुट नहीं है। गेट का आउटपुट क्या होता है? एंड का 0 0 0 1। नैंड का क्या होता है? 1 1 1 0। ओके, और का क्या होता है? 0 1 1 1। नॉर का क्या होता है? 1 1 1 0। तो बीच में वन तो कहीं नहीं आया ना, ना एक्सऑर में आया ना एक्सनॉर में आया। दैट मीन्स ये कोई आपका कोई गेट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, ये सिंपल एक लॉजिक है। तो इस लॉजिक को बनाने के लिए इसका गेट कौन सा गेट है, विच गेट इज बेसिकली यूज टू डिजाइन द टू गेट द लॉजिक ऑफ और द आउटपुट लॉजिक। देन यू हैव टू सी कि मेजॉरिटी ऑफ आउटपुट क्या है? 0 0 0 0। दैट मीन्स जीरो को प्रायोरिटी देते हैं तो कौन सा गेट यूज होता है? दैट मीन्स एंड गेट। ओके, सो एंड गेट ऐसा गेट है जिसमें आपके पास मेजॉरिटी ऑफ जीरो है, 0 0 0 0 1। दैट मीन्स ये डिसाइड हो गया कि ये तो एंड गेट है। ठीक है, दैट मीन्स ये डिसाइड हो गया, दैट इज ये एंड गेट है। ओके, राइट। देन आपके पास नाउ यू हैव इनपुट ए एंड इनपुट बी। अब देखते हैं कि वी नीड आउटपुट 0 1 0 0। We need output 0 1 0 0, right? So let's see. So if I give A0 and B0, I'm getting first output. This is correct. Okay. Now I'm giving 0 1. So with 0 1, I'm getting 0, not 1. So in that case, मुझे क्या करना होगा कि I should get 1. So मुझे इस सेक्शन पे मुझे 1 चाहिए। इस सेक्शन पे मुझे 1 चाहिए, तो मुझे 1 कैसे मिलेगा? तो मुझे 1 मिलेगा। ओके, मुझे 1 मिलेगा अगर मैं यहां पर एक नॉट गेट लगा दूं, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है? 0 को 1 कर देता है, राइट। तो अगर मैं यहां पर एक नॉट गेट लगा दूं यहां पर, ओके, सो मुझे क्या मिल गया? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर मैं यहां पे एक नॉट गेट लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0 से ये 1 मिल गया। ओके, दिस इज 1। सो 1 and 1 will give you 1. That means we have achieved the second logic, right? And then if I give 1 0, if I give 1 0, then this 1 will become the 0, and the 0 will 0 make the output 0. That is, this is also correct. And then if we give, and if we give 1 1, okay, and if we give 1 1, okay, 1 and 1. So 1 will give, then 1 will pass from this NOT gate will become 0. This 1 will become 1, and 1 0 will become 0. That means the current logic, the output is, the the circuit of this logic is this A and B out. Okay, so this is your circuit. So your difference is your XOR, difference is XOR, and borrow out is this. ओके, तो जब मैं कोई इंटरव्यू पे जाता हूं, ओके, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। आई आस्क वन क्वेश्चन बेसिकली। वो क्वेश्चन ये होता है कि ऐसे पूछता हूं कि ओके, आपको सबट्रैक्टर पता है? आप बोलते हैं यस सर, आई नो सबट्रैक्टर। ओके, तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाता, मैं पूछता हूँ कि ओके, ऐसा कौन सा गेट है? अच्छा, मैं फिर उसको बोलता हूँ कि ओके बच्चे, राइट द ट्रुथ टेबल। तो वो ट्रुथ टेबल लिख देता है। ठीक है, तो मैं उसको हार्डवेयर नहीं बनवाता हूं, मैं उससे बोलता हूं कि
ये जो नॉट, या फिर मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि ओके, मैं उसको बोलता हूँ ये बनाओ, फिर मैं उसको बोलता हूँ ये बनाओ, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि ये जो गेट है, ये गेट ये जो गेट है बेसिकली नॉट गेट है। ओके, ये बेसिकली, ये अगर नहीं होता तो क्या होता, या फिर ये किसकी वजह से आया, ये बेसिकली जो नॉट गेट है किसकी वजह से आया। तो ये नॉट गेट अगर उसने रट्टा मारा होगा, राइट, अगर उस बच्चे ने रट्टा मारा होगा, रट्टाफिकेशन, तो वो नहीं बता पाएगा। और अगर उसने रट्टाफिकेशन नहीं किया है और उसने अगर समझ के किया है, तो वो पक्का बता लेगा कि सर ये जो नॉट गेट है ये इस बोरो आउट की वजह से आया है। ओके, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आपको सब पता होगा, बट एटलीस्ट जो आपकी नींव है, जब हम घर बनाते हैं नींव खोदते हैं, नींव को हम जितना ज्यादा गहरा करते हैं, जितना ज्यादा उसमें हम प्लास्टर ईंट से उसको बिल्ड करते हैं, उतना ज्यादा पिलर या उतना ज्यादा लंबी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स है वही आपका नींव है। तो आपको ना एक एक चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली जस्ट टू क्लियर द एग्जाम, राइट, एग्जाम नहीं क्लियर करना है आपको। एग्जाम तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर ऑल व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, और जब आप नहीं बता पाते हो तो कंपनीज आती नहीं है, क्योंकि कंपनीज को पता है कि टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज में बच्चों के पास लेवल नहीं है। तो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं वो नहीं जाते हैं। इसलिए जो प्रोडक्ट कंपनीज होती है दे बेसिकली वेंट टू द आईआईटीज। बट ऐसा नहीं है कि टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज में ब्रेन नहीं है। देयर वी हैव मच मोर स्ट्रॉन्गर ब्रेन बिकॉज वी नो द फेलियर्स एंड वी नो द सक्सेस। ओके, सो आपको बेसिकली बहुत ही बेसिक लेवल पे जाकर सोचना होगा। तो जब आप कुछ सोचो तो आप उस पर इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनाओ। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई मत करो, उस पर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनाओ, अपने आप से बनाओ, और उसको अपने आप से रिप्लाई भी करो। ओके, कि मैंने ये पढ़ा, इस पे क्या इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, तो मैंने आपको ऐसे ही बोला, इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस वन की वजह से, राइट, इस वन की वजह से आपको, इस वन की वजह से आपको क्या मिला, कौन सा लॉजिक मिला, कौन सा गेट मिला। इस वन की वजह से मुझको क्या मिला, नॉट गेट। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये वन यहां डाला था तभी मुझे यहाँ पर ये नॉट गेट लगाने के बाद ही तो मुझे ये वन मिला। ओके, और बाकी ये जीरो, ये बाकी जो जितने सारे जीरो हैं, ये जीरो, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये मुझे कब मिला, जब मैंने एंड गेट यूज किया। अगर मैं और गेट यूज करता तो मुझे शायद कुछ और मिलता। ओके, सो आपको बेसिकली इस तरह से सोचना होगा अगर आपको अपना करियर कोर में बनाना है। ओके, देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो डू आई हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? ओके, नो क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ओके, नाउ इसको, इस सर्किट को इंप्लीमेंट करना। नाउ अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट this circuit, okay, with help of two types of universal gates. ठीक है, two types of universal gates. If you all remember my second और थर्ड क्लास, ठीक है, जो हमने सेकंड क्लास या थर्ड क्लास लिया था, उसमें हमने यूनिवर्सल गेट्स को समझा था कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। वो गेट्स जिससे सारे गेट्स बन जाएं, वो यूनिवर्सल गेट्स है। तो हमें क्या पता है, नैंड और नॉर, ठीक है, नैंड और नॉर हमारा यूनिवर्सल गेट्स है। ठीक है, बट हमने इसके अलावा और भी गेट डिस्कस किए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल
मेरा, ठीक है, ये जो सिंगल इनपुट बबल और है और सिंगल इनपुट बबल एंड, इसको भी हम एज अ यूनिवर्सल गेट की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल, इसको भी हम एज अ यूनिवर्सल गेट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट 2 डेज में मेरी और भी लर्निंग स्टॉप हुई है। जब मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ तो उनके साथ मैं ऐसा नहीं करके आता है कि मैं पहले से कुछ पढ़ के आ रहा हूँ और नोट्स बना के आ रहा हूँ और बच्चों के साथ डिस्कस करना है उसी नोट्स को, और मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। तो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली हियर कि वेन एवर आई एम working with my juniors, my kids, whoever is coming and learning here, मैं इनको ये बोलता हूँ कि ये मैं हूँ नहीं, ये आप हो। ये आप यहाँ पर खड़े हो और मैं वहां पर बैठा हूँ, और मैंने आपको बोला इसको एक्सप्लोर करो, तो आप कैसे एक्सप्लोर करोगे? तो दिस इज हाउ वी हैव एक्सप्लोर इट। ओके, तो इसके अलावा और भी कई कॉम्बिनेशंस निकल कर आए, जैसे कि अगर मेरे पास 2 इनपुट है और आगे जाकर मेरे एक, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, ठीक है, तब भी मैं एक सारे गेट्स बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को, इन डबल इनपुट बबल और एंड सिंगल इनपुट बबल और को यूज करूंगा, तो मैं और भी इन दोनों को एक साथ यूज करूंगा, राइट? तो मैं और भी गेट्स बना सकता हूं। तो दिस इज द सेकंड इन्वेंशन। द फर्स्ट इन्वेंशन इज विदाउट शॉर्टिंग, यू हैव टू मेक द गेट्स विदाउट शॉर्टिंग, विदाउट शॉर्टिंग। ठीक है, विद शॉर्टिंग तो अवेलेबल है, विदाउट शॉर्टिंग was our unique idea। Then we have used this single input bubble or a single input bubble and gates to make a or gates, sorry, to make a other gates, and then अगर मैं इनको भी यूज करता हूं तो इसको भी यूज करके बना सकता हूं। तो देखेंगे, मैंने ये सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने लिया हुआ है। तो आगे बढ़ते। ओके, ए एंड बी। तो अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे सिंपल नैन गेट से बनाना है, सिंपल नैन गेट से, तो कैसे बनेगा? So XOR is made up of 4 NAND gates. Okay, XOR is made up of 4 NAND gates. Oh, Storm is here. Okay, this. Okay, so this is made up of. This is your XOR. Okay, and this NOT gate is made up of 1 NAND gates. Okay, and again this AND gate is made up of 2 NAND gates. Okay, so मैं आपको यहाँ पे दो तरीके से है इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा। अगर आपको बुलियन अलजेब्रा बहुत अच्छे से आती है देन आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो बाय राइटिंग दिस की ओके, यहाँ से आपका ए एंड बी है। Okay, this is your A, this is your A, and this is your B. So you are getting here A dot B bar. Okay, इस लाइन को आपको क्या मिल रहा है? A dot B bar, राइट? तो ओके, एंड इस लाइन को आपको क्या मिल रहा है? A dot B bar, राइट? तो अगर मैं इसको इसको हटा देता हूं, ओके, अगर मैं इसको हटा दूं तो वाई? बिकॉज आई एम गेटिंग द सेम थिंग। तो मेरा सर्किट क्या बनेगा? मेरा सर्किट बनेगा, ओके, मेरा सर्किट क्या बनेगा?
मेरा सर्किट बनेगा, यहां से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, इस गेट को मैंने हटा दिया, करेक्ट। ओके, तो मुझे क्या मिला, ये मिला, ये मिला, करेक्ट, और ये मिला, तो मेरा ये गेट हट गया। तो अब आप क्या देखोगे, ए और बी, तो मैक्सिमम कितने गेट्स लगे बनाने में, नैंड नैंड से अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम कितने नैंड गेट्स लगे, 7। अभी मिनिमम कितने लगेंगे वो देखते हैं, मिनिमम। तो अभी आप देखो, ये और ये भी आपका ए डॉट बी बार है, और ये भी आपका ए डॉट बी बार है, तो अगेन ये भी तो सेम हुआ, तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो। ओके, और इसका जो आउटपुट आ रहा है, आप डायरेक्टली इसको दे सकते हो। ओके, सो आपका क्या बना सर्किट, फाइनल सर्किट आपका क्या बना, सो आई हैव रिड्यूस 2 गेट। पहला मैंने यहां पे रिड्यूस किया, मैं इसको देता हूं 1 2 3 4, दिस इज 5 6 एंड 7। सो हियर आई हैव रिड्यूस्ड 5 एंड हियर आई हैव रिड्यूस्ड 6। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन क्या बना, ये छोटा था इसलिए बन गया सर्किट, बट अगर ये बड़ा सर्किट होता तो क्या होता है। Okay, so this is your interview question. This is your interview question. This is not a foolish question. Okay, इस क्वेश्चन से आपको 2 4 5 6 लाख की जॉब से स्टार्टिंग मिल सकती है। ओके, आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, एंड देन इसको लिया मैंने यहाँ पे वेरीफाई किए। So finally, this is your difference. This is your difference, and this is your borrow out. ओके, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, 0 0, ठीक है, चलो 0 1 पे करते हैं वेरीफाई, 0 1। तो 0 1 पे क्या मिलेगा, 1। नाउ दिस 0 इज हेयर, दिस 0 एंड 1 विल गिव 1। नाउ दिस 1 इज एक्चुअली, दिस 1 इज हेयर एंड दिस 1 इज हेयर, this 1 and 1 will give 0, and this 1 and 0 will give 1, and this 1 will come here. Okay, if so, 0 1, okay, 0 minus 1, that is 0 minus 1, there your difference is 1, and your borrow out should also be 1. I am doing some mistake, that means 1 and 1, this 1 and 1 is 0, so I am doing some mistake. So 0 1 पर क्या मिलेगा मुझे, okay, this is, तो बेसिकली आई एम वेरीफाइंग माई लॉजिक कि मेरा लॉजिक सही है या नहीं है। ओके, मैंने मिटा दिया, या डिफरेंस, दिस इज difference is 1 and borrow out is 1. Okay, तो ये सर्किट, ये आउटपुट मेरा सही नहीं आया है, ठीक है, ये मेरा आउटपुट सही नहीं आया। फिर से वो वेरीफाई करते हैं, 0 1, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, राइट। तो 0 1 पर आई एम गेटिंग 1, दिस 0 इज हेयर, 0 एंड 1 विल गिव 1। ओके, तो वी हैव टू सी कि हमें इसको कहां से कनेक्ट करना है। ओके, अभी भी देखो गड़बड़ है, वाई, बिकॉज हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, राइट। तो 1 and 1 will give 0. Now this, if I am connecting this one, if I am connecting this one from to this gate, then I am getting 0. जबकि मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, 1, because at 0 minus 1 your difference is 0 and borrow out is 0. That means ये जो लाइन है, ये लाइन को मुझे कहीं और से कनेक्ट करना है, ठीक है, इस लाइन को मुझे कहीं और से कनेक्ट करना है, और उस कनेक्शन के दौरान मुझे, वी हैव टू मेक श्योर कि वो बाकी सारे लॉजिक भी बन के आ जाएं, दैट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 भी आ जाएं। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको ही देखता हूं, ठीक करता हूं। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा गलत हो गया, राइट।
आई डोंट नो आप लोगों को ये आता है कि नहीं आता, बट अगर आपको नहीं आता आप सीखो, ठीक है। सो मैंने यहां से लिया था, अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से लेता हूं, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मेरे पास जीरो दो जगह से आ रहा है। मेरे पास जीरो, एक जीरो मेरे पास यहां से आ रहा है और एक जीरो मेरा यहां से आ रहा है। तो मैं इस वाले से कनेक्ट कर रहा हूं, यानी कि गेट नंबर, दिस इज माय गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5। सो आई एम कनेक्टिंग from my gate 3. Okay, so I'm connecting from my gate 3. Okay, now let's see the output. आउटपुट चेक करते हैं सारे का। ओके, सारे का आउटपुट चेक करते हैं, तो लेट्स सी। ओके, तो सेम 0 1 चेक करते हैं, 0 and 1। ओके, so 0 1 means 1, this 0 is here, this 1 is here, this 1 is here, this 1 is here। 0 1 will give 1, 1 1 will give 0, then 0 1 will give 1, difference is 0। Now this 0 from 0 0, the 0 is from here, 0 0 will give 1, that means my output is correct। at 0 1 I'm getting 1 1। Okay, now 2 minutes। Okay, now let's see second one, 1 1। Let's take example of 1 1, 1 1। So at 1 1 I am getting this 0, here I am getting 1, this is 0, 1 0 will give 1, the 0 is here, this 1 is here, the 0 1 will give 1, this 1 and 1 will give 0। Okay, this 1 and 1 will give 0, right, and this 1। ओके, इस लाइन पे देखो, थर्ड आउटपुट, थर्ड के बाद क्या आया? 1, तो 1 and 1 विल गिव 0। ठीक है, इसका मतलब मेरा दो सही आ रहा है। सो द फाइनल क्वेश्चन इज, द फाइनल रिप्लाई इज दैट फाइनल रिप्लाई इज द मैक्सिमम इज 7 and मिनिमम इज 5। ओके, सो आप सोचो कि कितना लॉजिकल है ये चीजें। ओके, इसी चीज को फोकस करना है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढना है, राइट। इसका एक मेथड और है, इसका एक मेथड और है आपको सॉल्व करना है, तो वो मेथड मैं आपको कल बताता हूं, बिकॉज वो टाइम टेकन है। तो वो मेथड मैं आपके साथ आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और वो मेथड बहुत ही थोड़ा सा टाइम टेकन है, बिकॉज इसमें तो हमने चलो छोटा लॉजिक है इसलिए हमने मैनेज कर लिया, बट वो टाइम टेकन टास्क है। ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड बिफोर लिविंग, don't take digital lightly, because if you know the digital, believe me, you can do the programming in Verilog, VHDL, in C and C++। Okay, so digital is actually helping you to cover the 60% of the VLSI flow। Okay, if you love digital, you can go in DFT, you can go in DV, hardware programming, software programming। Okay, you can go in PD to understand synthesis, STA, and then PNR। Okay, so don't take digital lightly। Okay, digital is very, very important subject, and this is all from my side। Thank you everyone, good evening and Jai Hind।